I'm on question number 114 of HINSHIP. We're doing grain numerical. HINSHIP. Okay. A vessel laden with grain in bulk of storage factor. So storage factor of the grain is 1.184 cubic meter per ton. And it has a displacement of 87,284 tons. Her kg, assuming that the CG of the cargo in the filled holds is at the volumetric centroid, is 10.36 kg. Is 10.36. And FSM is 2643. FSM 2643. KM is 13.2. KM is 13.2. The volumetric healing moments of the filled holds, VHM, of all the filled holds, the total of that is 5864 M4, and partly filled hold is 14,400. Angle of flooding, theta F, is 37 degrees. The various Kn values are given for various angles of heel. We have to ascertain whether the ship satisfies the stability criteria for carrying grain in bulk, and therefore should she carry grain or not. That is what we have to find out. So to begin with, सबसे पहले तो kg is given to us. VHM क्या होता है सर? VHM volumetric healing moment. Volumetric healing moment. So the kg solid is given to us as 10.36 meters. FSC will be FSM divided by W. So FSC will be equal to 2643 upon 87,284. So calculate FSC. .030. 0.030.
We know kg solid plus FSC gives us kg fluid. So 10.36 plus 0.03 gives us kg fluid equal to 10.390 meters. For the displacement W, Km is found out to be equal to 13.20 meters. That is given in this question. So therefore, Km minus kg fluid will give us GM fluid. Which is equal to 2.810 meters. So the GM is 2.810 meters. Now, you have to find out you will apply the correction. That means you'll make the table for GZ. So one table will be theta. So I'll skip that because that you know how to do the correction, correct? Is that okay? For the GZ curve, how to do the correction? Theta is given to you 0, 12, 15, 30, and so on and so forth. These values are given to you. The Kn values are also given to you. 0 is 0, 12 is 2.730, 15 is 3.440, and so on and so forth. These are given in the question. You will apply the correction due to vertical shift of G, which is minus kg fluid sin theta. So minus kg fluid is 10.39 sin 0 is equal to so much, minus 10.39 sin 12 is equal to so much, minus 10.39 sin 15 is equal to so much, and so forth. Correction lagaya, this will give you corrected GZ. First value will automatically be 0 in this case, and then you will find out the rest of the values. I'll pick up the values from the book. 12 ka value is 0.57. 15 ka value is 0.751. 130 ka 1.662, and so on and so forth. Ye values. These you know how to calculate. Okay. Any doubt so far? अभी तक जो मैंने किया है? सर ये GGH भी तो लगाते थे इसमें, GGH cos थीटा, वो नहीं लगा रहे? भाई मैंने कुछ जब जीजेड कर्व किया था तो कुछ फंडेज बताए थे वो सर एशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना सर? बस सिंपल मैंने कुछ फंडे आपको बता दिए थे. अब आपको आपका फर्ज है आपको उसको याद रखो. हिनशिप में मैंने आपको कोई जीजीएच लगाने को नहीं सिखाया, वो ए शिप के लिए है. ये हिनशिप कर रहे हैं हम. हिनशिप का मैंने आपको खाली बस एक ही फॉर्मूला बताया, के एन माइनस के जी फ्लूइड साइन थीटा माइनस जीजीएच कॉस थीटा. इसमें कोई जीजीएच, इसमें कोई कार्गो शिफ्ट नहीं हो रहा है.
तो इसमें कोई GGH cos थीटा नहीं लगेगा. GGV sin थीटा लगता है फॉर A शिप. Is that okay? इसके बाद you will make the GZ curve and plot it. So अब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे थीटा की और करेक्टेड GZ की. So आपने प्लॉटिंग करी. जीरो डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री और 10 और 20 के बीच में है 15 डिग्री और 10 और 15 के बीच में है 12 डिग्री. And then the values of this thing are given to us. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, and so on so forth. So ये आपका ग्राफ आप उसको ज्वाइन कर दोगे and you will plot the curve. So let us say आपका कर्व ये आता है. ये मैं रैंडम अभी ड्रॉ कर रहा हूं. This is a random curve which I have drawn. ये आपने ड्रॉ कर लिया. Now the VHM of the volumetric healing moment of the fully filled hold is given to us as a value of 5864 meter 4. The volumetric of healing moment of partly filled hold is equal to जो भी वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट दिया हुआ है 14,400 multiplied by 1.12. This is a factor which is applied. How much does this come to? $14,400 multiplied by 1.12. 17280. 17280. What is the total volumetric healing moment? Add these two. सर ये 1.12 है कि 1 point क्या लिखा है? 1.12 is the factor with which the partly filled hold gets multiplied. सर वो 16128 आ रहा है सर. 16128. 16128. Okay. सर ये कोई फैक्टर कांस्टेंट है सर, इसे हमेशा यूज करना है That's ऐसे right. ही? That's right. 16128. Correct. ये constant factor है for partly filled holes. बुक में 1.2 यूज किया है. वो typo error है. That is 1.12.
वो टाइपो है, दैट्स अ टाइपो एरर। इन दोनों को ऐड कर दो। 21992. How much? 21992. 21992. This is the total volumetric healing moment. Now lambda zero is given by total volumetric healing moment divided by stowage factor into displacement. Lambda zero is equal to volumetric healing moment upon stowage factor into displacement. So put the values: 21992 divided by 1.184 into 87284 is equal to 0.213. 0.213 meters. This is the value of the lambda zero. That means at 0 degrees, the value of the healing lever. So lambda 40, the value of the healing lever at 40-degree angle of heel. Sir, will be- lambda क्या है? I'll just come to that. Is equal to 0.8 times, again constant value, lambda zero. So this is equal to 0.8 times 0.213. 0.170. Point 170. 170. कहने का मतलब ये है कि कि अगर मैं 0 डिग्री पे जो हीलिंग लीवर है मेरा, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ग्रेन, that will be a value of 0.213. That means on the y-axis, I go for a value of 0.213. So supposing मेरी ये value आती है, this is 0.213. Then this value is the lambda zero value for me. Similarly, for 40 degrees angle of heel, my value of the healing lever will be 0.170. So on 40-degree value, I look for 0.17 on the same scale. This is 0.17. So I join these two lambda values. This is lambda 40, this is lambda 0. This is my healing lever or healing arm curve. That means अगर मेरे जहाज पे अगर पार्टली फिल्ड होल्ड होगा तो मेरा जहाज जो due to shift of grain of this partly filled hold and due to the fully filled hold, जो healing moment create होगी, that would be equal to 0.213 for 0 degree and 0.170 for 40 degree angle of heel. ये कहने का मतलब है. So I join these two fellows, I get what is called as a healing arm curve. Is it okay up till now? तो सर इसे हम लैम्डा क्यों लिख रहे हैं? इसे जीजेड भी तो लिख सकते थे.
तो अब ये सर अब आपके राइटिंग अब आपके ये ग्रेन में चला गया। तो जब आपने ग्रेन करी थी आपके कार्गो में, तो उस वक्त उन्होंने कराया होगा आपको सर ने। सर लैम्डा तो कहीं आया ही नहीं एक्चुअली सर। लैम्डा नहीं आया होगा, बट व्हेन यू डिड ग्रेन स्टेबिलिटी, द ग्रेन कार्गो, तो उस ग्रेन कार्गो में you would have done the fully filled, the partly filled, and the settling of the grain. So the value of the healing lever is called as lambda. अब क्यों उसको lambda कहते हैं? It is generally called as lambda only. So the value of that is at 0 degree is 0.213, which is picked up on the y-axis, and the value of 40 degrees is 0.8 times that value. So this will be a slight taper, which will go downward like this. The point at which the healing arm curve cuts the GZ curve is this point. From this point, you drop a perpendicular down. Wherever it cuts on your x-axis, that is your, supposing this is 4.5 degrees, then that is your angle of heel due to shift of grain. I repeat, wherever it cuts, the healing arm curve cuts the GZ curve, that point, that value is your angle of heel due to shift of grain. So the angle of heel due to shift of grain comes as equal to 4.5 degrees. And what is the limit for grain cargo? For the angle of heel should not exceed how much? Any idea? The angle of heel should not exceed 12 degree due to shift of grain. So ये angle of heel 4.5 should not be greater than 12 degree. ये requirement है grain की. How much should be the GM of the vessel when we load the grain? Anybody? The GM should be how much? तुझे याद है कि नहीं? Sir, It should not be less than 0.1. correct. At least 0.3. The GM should be at least 0.3 meters. So since my GM came out to be 2.810, so 2.810 was greater than 0.3 degrees, so 0.3 meters. So this criteria is also met. ये सब criterias हैं. So पहला criteria GM, second criteria angle of heel. ये दो criteria हो गए हमारे fulfill. हाँ जी, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Anybody has any doubt? Okay.
Moving ahead. Third criteria. The third criteria is the net residual area. The net residual area between the healing arm curve and the GZ curve. The net residual area मतलब क्या? ये वाला area. This is known as net residual area. Up, I'll go further abhi in this. This is the net residual area. ठीक है? अब what does the grain stability say? The net residual area between the healing arm curve and the GZ curve up to 40 degrees or angle of flooding, whichever is least. Whichever is least. Now, in this case, the angle of flooding is given to us as 37 degrees. That means 37 degrees or 40 degrees, whichever is least. कौन सा लीस्ट है भाई 40 और 37 में 37 अगर मैं किसी एक और क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ फ्लडिंग 42 डिग्रीज दे दूं सर 40 ले लेंगे फिर 40 ले लेंगे 40 फिर 40 ले लेंगे सो बी केयरफुल जब क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्लडिंग दिया हुआ होगा तो 40 डिग्रीज और एंगल ऑफ फ्लडिंग विच एवर इज लीस्ट तो अगर 40 डिग्रीज और एंगल ऑफ फ्लडिंग 39 दिया हुआ है तो यू विल टेक 39 अगर एंगल ऑफ फ्लडिंग 41 दिया हुआ है तो देन यू विल टेक 40 गॉट इट got it यस okay so in this case 40 or 37 whichever is least that means that is 37 degrees so the requirement is the net residual area up to 37 degrees should be not less than 0.075 meter radian this is the requirement should be not less than that means the NRA the not net residual area up to 37 degrees should be 0.075 मीटर रेडियन यहां तक समझ आ गया सर ये सब याद रहना चाहिए ना सर क्राइटेरिया है तो हाँ ये बेसिकली 5 ही क्राइटेरिया हैं तो इसलिए याद रह जाएंगे ये हिंट से सर इसमें नहीं मिलेगा ना सर ये जो पार्टिकुलर्स हैं नहीं पर्टिकुलर्स में नहीं मिलेगा पर्टिकुलर्स में नहीं मिलेगा सो पहला वाला हो गया हमारा 0.3 दूसरा वाला हो गया एंगल ऑफ हील 12 डिग्री तीसरा हो गया NRA 0.075 बस ये तीन ही वैल्यूज हैं ओके अब मुझे एरिया अप टू 37 चाहिए तो व्हाट विल आई डू आई विल ड्रॉ अ लाइन एट 37 तो ये 37 डिग्री है so I will draw a line will draw a line at 37 so that means I don't need to draw a line at 40 basically that is what I was trying to tell you but मैं ये area नहीं count हो रहा so up to 37 degrees ये this will be called as NRA
ये समझ में आया? ये मैंने क्या किया, मैंने 37 पे एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया एंड आई एम लुकिंग एट द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 37 बिटवीन द हीलिंग आर्म कर्व एंड द जीजेड कर्व। इस एरिया की बातें कर रहा हूं, ये शेडेड एरिया की। इज दैट ओके? Yes. ओके, ऑलराइट। मुझे जीरो, सो बेसिकली एनआरए NRA will be equal to the total area under the GZ curve up to 37 degrees minus अब ये हीलिंग आर्म में आ जाता हूं मैं, तो आई एम गिविंग सम नेम्स नाउ। So I'm calling this as point A, alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. So alpha, Bravo, Charlie, I can assume it to be almost the same as a triangle. So minus area triangle ABC minus area trapezium BCDE। ये समझ में आया ये क्या किया मैंने? Is this line okay with everyone? Is this line okay with everyone? The सर जो ट्रायंगल एबीसी लिखा है आपने सर, उसके बगल वाला भी ट्रायंगल तो रहेगा ना सर? ये ट्रेपीजियम है। इसके जो सर फर्स्ट ट्रायंगल है सर, एबीसी के अपोजिट में जो बना है उसके। ऑपोजिट अच्छा, वो तो काउंट ही नहीं होगा सर। ओके सर। वो काउंट ही नहीं होगा, ये तो काउंट ही नहीं होगा, ये तो बाहर हाँ चला सर, गया। ओके। तो मेरे को चाहिए एनआरए, तो एनआरए विल बी द टोटल एरिया अंडर द जीजेड कर्व अप टू 37। अब उसमें से मैं माइनस करना शुरू कर रहा हूं, तो मैं इसको माइनस कर रहा हूं एबीसी को, और फिर ये ट्रेपीजियम को माइनस कर रहा हूं, तो मेरे को ये रेड, ये शेडेड एनआरए मिल जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। ओके, so let me start with the first one, area up to GZ curve up to 37। मुझे एरिया चाहिए 0 to 37 का, which is the fastest way that I have taught you to find out the area. तो सिम्पसन रूल सर, उसको 3 में डिवाइड करके फिर 141 बताया था आपने। बिल्कुल ठीक। सो तो मेरा 4 किस पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा? सर 18.5। करेक्ट। तो 0 और 37 का मध्यांतर, मिड पॉइंट, is 18.5. So I go on 18.5 and 18.5 पे मैं GZ की वैल्यू निकाल लेता हूं। ये समझ में आया मैंने क्या किया? सो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं एरिया
अप टू 37 डिग्रीज निकाल रहा हूं अभी सबसे पहले. So my theta is 0, 18.5, 37. Similarly, my ordinate is nothing but GZ. Values are 0. 37 की वैल्यू मैं इधर से निकालूंगा कर्व से. So I'm just picking up the values. It is 1.86 from the book. And मुझे 18.5 की वैल्यू चाहिए. So 18.5 की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा. वो आएगी roughly 0.96. ये कर्व से आएगी. Is that okay? इसमें मैं सिम्पसन मल्टीप्लायर लगा रहा हूं. 1, 4, 1. Next column, area function. 0 ones are 0. 0.96 into 4. 6 fours are 24. 2. 9 fours are 36 into 30. 3.84. 3.84. 1.86. सबको ऐड कर दो. ये आपको देगा SOP 5.7. 5.70. Yes. ठीक है. Area will be equal to H by 3 into SOP. H is how much? 18.5. 8.5. 18.5. I want to get rid of degree. How do I do that? Divide by Radian वाला सर. 57.3. Divide by radian. Divide by 57.3 into 5.7. Tell me the value of area. 0.613. 613. मीटर रेडियन. यहां तक ये मेरा टोटल एरिया है. फ्रॉम पॉइंट A onwards going right up to 37 and right up to the नीचे. ये मेरी वैल्यू हो गई ये पहले वाले की. अब मैं चला ट्रायंगल की तरफ. सर जो आपने शेडेड एरिया किया हुआ है, मैं सर एक्चुअली उसी का तो एरिया चाहिए सर एक्चुअली में. मुझे तो उसी का एरिया शेड चाहिए. किया है आप. तो सर बिल्कुल उसी सही. को ओरिजिन बी पॉइंट को ओरिजिन मान के वही नहीं निकाल सकते हम? आप बताओ. सर बी पॉइंट मेरे को पता है सर 4.5 पाई एक्सिस हो गया. आपकी BD जो है, आपकी जो BD है वो हॉरिजॉन्टल है. नहीं सर, वो स्लैंट है. वो स्लैंट है. पीछे की तरफ. वो पीछे की तरफ है. वो टेपर कर रही है. ओके सर. तो इसलिए ठीक है. अगर वो हॉरिजॉन्टल होती तो कर सकते थे. व्हाट यू आर सेइंग. ओके सर. राइट. अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ BC. तो ये मैं निकालूंगा BC की वैल्यू कर्व से ही. ये अगर 0.213 है तो BC कितना होगा. तो वो मैंने निकाला मेजर करके. वो BC की वैल्यू आई 0.20. सिमिलरली मैंने DE को भी मेजर किया कर्व से और उसकी वैल्यू आई 0.18. ये समझ में आया मैंने क्या किया. इज दिस ओके. तो स्केल से मेजरमेंट करके ये स्केल से मेजर किया मैंने. अगर ये
इतना 0.213 है और ये टेपर डाउनवर्ड कर रहा है, तो BC कितना होगा? तो ये मैंने स्केल से मेजर किया। अब मुझे चाहिए ट्राइंगल ABC। प्लीज म्यूट योर माइक्स। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ into AC into BC. So half into AC. AC is 4.5 degree. Get rid of degree. Denominator में चला गया 57.3 into BC 0.2. So area of triangle ABC is how much? Yeah, 0.008. 0.008. So many meter radian. So ये मेरा ये वाले की Sir, वैल्यू आ गई। ये स्केल वाला नहीं समझ आया सर, BC स्केल से मेजर करना है। हाँ, अगर ये मेरा इतना 0.213 है वाई एक्सिस के स्केल पे, तो BC वाई एक्सिस के स्केल पे कितना होगा? अच्छा, सिमिलरली DE वाई एक्सिस के स्केल पे कितना होगा? अगर मतलब सर जो सर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है स्केल का इनिशियली में, उसी स्केल पे मेजरमेंट करना है सर एक्चुअली। जो भी स्केल वाई मैंने वाई एक्सिस एक्सिस का जो स्केल का जो स्केल लिया है, जो सर मतलब जो मानक लिया हुआ है इनिशियली, उसी पे मेजरमेंट करना है सर वाई एक्सिस वाले स्केल पे ना सर, उस दोनों को। बिल्कुल ठीक। ओके सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है, इज दैट ओके? भाई ठीक है सर। देखो, अगर 40 डिग्री वाली वैल्यू मेरे हीलिंग आर्म कर्व की 0.17 थी, तो DE विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0.17। Yes or no? Are you with me? यस सर। DE will be greater than 0.17 and BC will be lesser than lambda 0. यस सर, उधर वाइड ज्यादा स्लैंट नीचे हो रहा है आगे साइड। हाँ, बेसिकली ये टेपर कर रहा है ऐसे, ये ऐसे टेपर करता हुआ जा रहा है। 0.21 से 0.17 तक का टेपर है ये। सर ये 57.3 सर, अगर डिग्री में चेंज करना है तब भी डिवाइड करते हैं, और डिग्री को रेडियन में चेंज करते तब भी डिवाइड ही करते हैं सर? नहीं, तब तो मल्टीप्लाई होता है ना, वो तो हम कभी यूज सर ये करेंगे नहीं। 4.5 सर तो 4.5 डिग्री में डिग्री था, था ना, तो वो उसको 1 डिवाइड डिग्री कर है दिया। ना, 1 डिग्री है ना, तो डिग्री को गायब करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/57.3 रेडियन। सर जब ऊपर हमने सर मल्टीप्लाई किया था 57.3। नहीं, वहां पे भी डिवाइड किया था। ओके 18.5 डिग्री था ना, तो डिग्री को आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ द डिग्री, तो डिवाइड कर दिया ओके 57.3। ओके सर। ओके, अब मैं आ रहा हूँ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम BCD। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम BCDE will be equal to half into sum of parallel sides. Sum of parallel sides. Which are the parallel sides in this? BC BD plus DE. These are the parallel sides. Into difference between them is CE. ये समझ में आया? Is this okay?
सर फिर से बता दो सर एक बार इसको, इसका वॉल्यूम कैसे निकाला सर, एरिया इसका सॉरी। area of the trapezium is half into sum of parallel sides. BC plus DE are parallel to each other. ओके Into distance between them is CE. ओके Is this okay with everyone? So half BC is 0.2. DE is 0.18. Into CE कितना होगा? How much will be CE? 37 minus 4.5. It's 4.5. That is 32.5. 32.5 degrees. Get rid of degrees. Divide by 57.3. Half into 0.38 into 32.5 upon 57.3. जीरो 0.178 0.178. 107. नहीं सर मेरा 108. 108 108. 108 0.08. Is this okay with everyone? Now you put the values and tell me the NRA. Please mute your mics. जीरो 0.497 आ गया सर. 497 decimal 497 NRA is 49. मेरा 498 आ रहा था. या 497. ओके ठीक है. 497. 498 are 0.497, 0.498. Okay, fine. That is the net residual area. Now, since 0.497 is greater than 0.075 meter radian, hence point number 3 is satisfied. Is this okay? Is this okay? So, point number 4. Vessel is upright on departure.
This is point number 4. That means no list. That is no list. That is evident from the curve only. This is a T1 curve. There is no list. And point number 5 is vessel meets the grain stability requirements during the voyage. This is the 5th point. So ये 5 requirements हैं for vessel to load grain. That is The last one is vessel meets grain stability requirement. during the voyage. Okay, sir. Vessel meets the grain stability requirements during the voyage. So 5 requirements हैं. सबसे पहला GM should be greater than 0.3. वो हमारा था. Second, angle of yield due to shift of grain should be not greater than 12 degrees. वो हमारा था. Third, net residual area should be greater than 0.075 meter radian. वो हमारा है. Fourth, vessel should be upright on departure. That is, she should have no list. वो भी है हमारा. And fifth, vessel should meet the grain stability requirements. ये जितनी भी requirements हमने करी, ये throughout the voyage भी करेगा. So therefore, hence the vessel meets the grain stability criteria, and hence she is okay to load grain. Hence she is okay to load grain. सर फिफ्थ पॉइंट क्या है सर? Vessel meets the grain stability requirements during the voyage. मतलब सर वो 5वां पॉइंट जो वो बाकी चौथे की बात कर रहा है, मतलब सर वही तो. That's right. जो बाकी जो 5वां पॉइंट है बाकी है वो सारे 4 की बात कर रहा है कि ड्यूरिंग द वॉयज ऑल्सो ये सब रहेगा. सर नेट चला गया सर. तो 4th पॉइंट सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सर, वो कैसे क्या लिखा सर आपने? Vessel is upright on departure. That is no. So this curve is a T1 curve. It is not a T3 curve. So there is no list. Yes sir. So that itself shows that she is going to be upright on departure. It's a T1 curve. And the 5th one is the vessel will meet the grain stability requirements during the voyage. That means ये जितनी भी ऊपर वाली 4 थी, ये throughout in the worst case condition also she will be meeting. So अगर ये 5 चीजें मिलती हैं, इसका मतलब है vessel meets the grain stability criteria, and therefore now she can go ahead and load grain. इसका मतलब ये. तो जब हम ग्रेन लोड करने से पहले हम ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं. जब हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन हमको देता है जिसे हम कहते हैं DOA, जिसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन. बिल्कुल सही. DOA. तो एडमिनिस्ट्रेशन हमको DOA देता है. इसका मतलब है
I am meeting the intact stability requirements of grain and therefore I can load. सर वो DOA तो एक ही बार इशू होता है ना, या ये कैलकुलेशन हर बार भेजनी पड़ती है? हर बार भेजनी पड़ती है। अच्छा। हर बार भेजनी पड़ती है। अगर मैं आज वॉयज कर रहा हूँ, फिर 1 महीने के बाद दोबारा वॉयज करूंगा, फिर मेरे को एक और फिर से वो चाहिए, मुझे अप्रूवल लेनी पड़ती है। सर Okay, DOC एक बार इशू करते हैं ना सर? हाँ, डोंट मिक्स अप DOC विद ऑल दिस, वो सब मत करो, ये DOA की बात हो रही है। भाई इस बार मेरा वॉयज में मुझे 60,000 टन कार्गो आया है, अगली बार शायद मेरे पास 40,000 ही आएगा, फिर तीसरी बार शायद मेरे पास 50,000 आएगा, चौथी बार मेरे पास 30,000 आएगा। तो मेरी कार्गो में होल्ड्स में जो क्वांटिटी है हर बारी बदलती रहेगी। अगर मेरी क्वांटिटी हर बार बदलेगी तो मेरी वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मूवमेंट हर बार बदलेगी वॉयज वाइज। That means each voyage is a unique voyage for me.